बस भाई 1 सेकंड में लाइव जा रहे हैं अपन लोग। चलेगा। यस। सो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के अंदर, वरुण जी। थैंक यू सो मच। सो नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में बहुत रेनाउंड, बहुत फेमस वरुण भाई, और ये हैं अमेजन AWS क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर और साउथ अफ्रीका से। सर भाई कैसे, बढ़िया आप? थैंक यू, सब बढ़िया भाई, सब सब अच्छा। सब बढ़िया हो यार। आपने बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो चाह रहे थे कि है ना सर तपन भाई किसी ऐसे बंदे को लेकर आओ जो अपने क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर हैं और किसी कंपनीज के अंदर। तो मतलब अपना एक भाई है, उनको लेकर आते हैं अपन अपने पॉडकास्ट के अंदर। कहते हैं पॉडकास्ट के अंदर है ना, ये आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उन लोगों के लिए जो बिगिनर है। जैसे अपन ने भी कभी अपन ने स्टार्ट करा था, स्टार्ट करने के बाद फिर काफ़ी स्ट्रगल करा अपन ने और काफ़ी कुछ सीखी अपन ने, और अपन को गाइडेंस कम मिली तो अपन प्रॉपर पाथ नहीं ले पाए जल्दी। तो इस पॉडकास्ट की हेल्प से हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली गाइड कर पाते हैं। और आप जैसे कि आप जो बोलेंगे गोल्डन वर्ड्स निकलेंगे जो बेसिकली, तो वो क्या होंगे, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो वो हम लोग ट्राई करते हैं हमारे इसके पॉडकास्ट के थ्रू लेकर आने के लिए। ठीक है भाई, तो गाइस तैयार है? हाँ Thanks to you also, like I have seen कि since the time you started this channel और अभी तक like the way अपने सिक्योरिटी फील्ड का एक चीज है कि हमारे सिक्योरिटी फील्ड में लोग सिखाते बहुत मुश्किल से है, हाँ। like बहुत मुश्किल से सीखना पड़ता है। हम्म। And like I have seen since the time you started this channel और अभी तक I think you are doing a great work थैंक्स। सबको सिखाना सिक्योरिटी, क्योंकि जिस चीज से हमने स्ट्रगल किया यू आर गिविंग दैट टू अदर पीपल, सो दैट्स यस, वेरी ग्रेट थिंग। थैंक्स भाई कि हमारा इनिशियली बेसिकली हमने जैसे स्टार्ट करा, इनिशियली बिगिनिंग में आपको कंटेंट नहीं मिलता, वीडियोस नहीं मिलती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। सो ऑन आवर हैकर ब्लॉग बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं कि उन सारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड बेसिकली, क्योंकि हमारी जो चैनल है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिक आती है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अपना इंडिया तो है ही, सारी साथ में दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, तो सब के सब देखते हैं। तो बादू में आपको सेशन का जो सीक्वेंस रहने वाला है, स्टार्टिंग के 2-5 मिनट जो है भाई के मैंने लिए हैं, ठीक है ना। अब जो है रिद्धि अपना इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 क्वेश्चन रिद्धि पूछेंगे इनसे, और वो सारी डिटेल के बारे में भाई डिटेल में बताना कोई भी चीज़ है ना। ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट के 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे मेरे, जिसमें मैं काफ़ी कुछ भाई से पूछूंगा उनके जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने करा, क्या करा, और काफ़ी कुछ टेक्निकल बातें होने वाली है। पॉडकास्ट में सिर्फ खाली बातें नहीं होगी, काफ़ी कुछ ज्ञान भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें? चलेगा, श्योर। चलेगा सर, ओवर टू रिद्धि। So, first of all, welcome Varun. How are you? थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good, absolutely fine. So, thank you so much for coming in this podcast. एंड आज जो पॉडकास्ट होने वाला है फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, बहुत अमेजिंग होने वाला है, राइट? जैसे कि अभी तपन ने बताया। सो अभी जो भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे, सो बी रिलैक्स, एंड जैसा आपने फेस किया अपनी जर्नी में, जैसा आपने जैसे सीखा, जैसा स्ट्रगल फेस किया एंड आगे आप ओवरकम हुए, वो पूरी जर्नी हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइएगा, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिले, राइट? So, shall we start now? Yeah. All right. All set. Okay. So, first of all, first question from my side is, please give your brief introduction. Okay. So brief introduction. I start like my education background is electronics and telecommunication, and मैंने पुणे से अपना engineering degree किया. After that, I started working as a system administrator. That was in Bangalore, और वो एक startup company था. Okay. So, where I previously learned the you were in basics. India only, and then you shifted to South Yes. Africa. All right. Right. So my Great. initial years were there itself. I started with a startup company, and वहाँ पे I used to do all the system admin work, like like it was a startup company, so you understand जब कोई startup company होती है, you are the person It जो faces patching lots भी of कर रहा है struggle. cable.
या पैच भी कर रहे केबल, उसके बाद डीसी बनाओ, ये करो, लाइक ऑल द बेसिक जो क्रक्स होता है, दैट आई लर्न फ्रॉम दैट स्टार्टअप जॉब. एंड उसके बाद आई शिफ्टेड टू टाटा, where I was working as network engineer, and वहाँ पे I started working on networking a bit. And at that point of time, there was a friend of mine. She had done CCI in security, and she told me the word security, and that was the first time I heard the name. Okay, security कुछ होता है. And उस time पे Tata was starting their first pilot security team. उससे पहले TCTS, Tata Communications, did not had any security team, and they started making their own पहला team जो security में काम करेगा टाटा में. Okay. And me and my colleague of that, तो हम उसने मुझे सिक्योरिटी वर्ड बताया कि ओके सिक्योरिटी कुछ ऐसा होता है, इसमें हम चीजें हैक करते, सिक्योर राइट करते हैं. राइट. And I was एज quite सॉरी fascinated. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं Yeah. सब्सक्राइबर्स को ये बताऊंगी कि आज भी काफ़ी लोग नोन नहीं है सिक्योरिटी से, तो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड Right. फील्ड, राइट? Yeah. या प्लीज So कंटिन्यू. या I was quite fascinated कि ये सिक्योरिटी क्या है, क्या इसमें होता है, because I had networking and system admin background, तो इतना मुझे पता नहीं था. But slowly I started, reading about that and learning. और फिर वहाँ पे interviews हुए and the team was built, and fortunately, luckily, somehow my friend wasn't selected in that security team, and I was selected because of my experience. And I started working on security then. I learned Palo Alto, firewalls, and like all the security things which are there. And slowly I got into the field of security audits. And so I did security audits for firewalls, switches, routers, and everything. And I got experience like network security का जितना audit का experience होता है, I got from there. ओके. And later I felt like I heard from somewhere like there's a web application security pen testing नाम की कोई चीज है, like people अच्छा. hack websites and all. So I was like, okay, let's do this thing. So I did a small course, and there was one company that was offering a role in Mumbai. कि उनको एक स्टार्टअप कंपनी था अगेन. एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई फॉर दैट, एंड इट वाज सिक्योरिटी कंसल्टेंट का पोजीशन. सो दे गेव मी ए सिक्योरिटी लाइक वेब कोड, लाइक ट्रायल के लिए हम सब यूज करते हैं सीखने के लिए. एंड दे गेव मी वन ऑफ द वेबसाइट्स कि हाँ तुम्हें इसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज निकालनी है. सो समहाउ थोड़ा बहुत जो आता था उससे मैंने करके एक अरे वाह. रिपोर्ट बनाया, अच्छा मैंने सेंड इट टू देम एंड दे लाइक्ड इट. And I know the basics of VAPT top 10 and all, तब तक रट लिया था, समझा नहीं था बट रट लिया था just for the सो sake of ये कब की बात है वैसे? कौन सा ईयर था इट वाज? This would be around 2017, yeah. All 17 right. or So 16. 2017, 17, right? Yeah, 17. Okay, yes. Yeah, so I got placed in that company. I shifted to Mumbai, and that is on the very first day. They are like, okay, अपना next project है, एक vulnerability assessment करना है तुम्हें, and you are the lead in that. Go ahead and do it. And I got totally puzzled. Like मुझे पता था, but practically कभी किया नहीं था खुद से, because मेरा previous experience था से network audits and firewall audit. Firewall में क्या होता है, Okay. switches, routers. So it means previously also you were in security audits. या फ्रेंड ने yes. बताया that time you come like you have heard about security term because you Right. yeah. So network security, sorry, network audits you are talking about. So I think it is Yeah, network security audit. audits. Yeah, right. Network security. Because my friend had done network security CCI, so my knowledge was limited. हाँ यही है CCI में जो उसने किया था, उसी का मैंने थोड़ा से सीख के, थोड़ा खुद से पढ़ के, like I was aware of network security part only. And later when I got the job, I started. So that was the time when I started working in Mumbai. I started extensively studying about web application security, pen testing, how to do it, क्या tools होते हैं, in-depth जो study होता है. That 3 years which I spent in Mumbai in that particular company, I learned in and out of like web application pen testing. And by the end of that Wow. job, when I left my job there,
I had done around, I think, 1,200 pen testing projects, around more than 1200. 500, Wow. yeah, and more than 500 network security projects, and many more like normal security consulting audits and projects. So that was a big learning, like, and that was a time when I met Tapan also during one of the engagements in that company. And after that, I understood, like, it, in security field, there's a moment when you feel like you have learned all, like, everything, you need something more now. So I reached that point wahan pe, and then I was like, okay, let me do something more into this, and like, let's go into security projects jahan pe manage karte security projects, like, right from start till end. So this is the time when I was like, okay, I got into one of the big four consulting firms, and I joined Yes. there as assistant manager in cybersecurity. And I worked on end-to-end projects of security, like from start until, and then I worked there for about 1.5 year. And I still wanted to continue, but during one of the engagements and one of the projects which I was working on, तो वहां पे कस्टमर के पास कुछ इंफ्रा था जो क्लाउड में था, एंड ही वाज लाइक, ओके, तुम्हें पेन टेस्टिंग करना है, बट वी आल्सो वांट यू टू पेन टेस्ट द क्लाउड एंड चेक द सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लाउड, इज इट सिक्योर और नॉट. एंड आई फेल्ट काइंड ऑफ लो बिकॉज आई डिड नॉट नो कि भाई सिक्योरिटी, क्लाउड का सिक्योरिटी क्या मैं हाँ, उसमें या चेक करूं. क्लाउड पेन सिक्योरिटी. टेस्टिंग पता है, हाँ, पेन टेस्टिंग पता है मेरे को कैसे करते हैं, वल्नरेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, नेटवर्क में कैसे निकालते हैं, बट क्लाउड का मेरे को कुछ नहीं था पता. So that was the point when I decided, okay, like, now next big coming thing, or the next, like, एक burst होने वाला है, that is of cloud, and I should learn about cloud security. And fortunately, at that point of time, I had one of my friends who was working in Amazon, and I just jokingly told him, यार कुछ security है क्या cloud में, वहाँ पे कुछ opening होगा तो बताना मुझे. Right, And he right. was like, yeah, अरे hi, let me just send you the LinkedIn for that. So उसने मुझे LinkedIn post send किया उसका, and I मजाक मजाक में, होता है कभी कभार अपने Right, like right. जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सब क्या करते हैं, कभी कभार बीच में दे कीप ऑन गिविंग इंटरव्यूज टू टेस्ट देयर लेवल, कि उनका भी मार्केट में क्या लेवल है, उन्हें कितना आता है, ये व्हाट आर चीज जरूरी रिक्रूटर्स. भी है. हाँ, टू कीप लाइक अप टू पेस की मार्केट में क्या हो रहा है, यू शुड कीप ऑन डूइंग दिस, तो मैं पता चलता है कि तुम्हारा लेवल क्या मार्केट में. सो आई यूज्ड टू डू दिस, एंड आई थॉट कि चलो, लाइक, आई हैड अ गुड, like, big paying good job in Mumbai in a big four consulting firm. I was assistant manager and all, but still I was like, okay, let's try करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, क्या जाएगा, I mean, टाइम पास के लिए. I did. The interview was quite extensive. Amazon का interview था. It wasn't easy at all. Right. Fortunately, I completed all the rounds. I had to fly down to Cape Town for a face-to-face interview, which was the last. Like, it was around, I think, 5 or 6 rounds. I don't remember now. So for the final round, I had to flew down to Cape Town for the face-to-face interview. Interview हुआ, I got selected. I went back, and after 3 or 4 months, I got the confirmation. I got into it. Still, I was a bit hesitant because Mumbai mein I had a comfortable life, and I was working in a field where I know Right, everything. right. Yes. And to go into something where you know nothing, that was like, you get uncomfortable. अरे क्यों करूं मैं ये चीज It's जो आती है, ये uncomfortable क्यों मुझे. as well Right. as it's very like अभी क्या करना है, अब कैसे करना है. So it's a Right, kind of true. situation. True. So Right. finally, I decided, okay, let's do it. Change is the only constant. That is my philosophy, which I always believe in. So I think that was the big faith of leap which I took, and I joined here. And since then, I think it's been 3 years now since I have been working with Amazon Web Services. It's been tremendous. Like, the kind of knowledge you get here, the kind of exposure, Exactly. like, it's, I haven't seen, like, I have worked in other big four companies and other companies also, but the kind of knowledge and exposure that you get here, it's like nothing.
ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच वरुण, इतना अच्छा आपने ज़्यादा अपना deep नहीं बताता। नो 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 इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया, एंड डेफिनेटली आपके इंट्रोडक्शन से हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक मोटिवेट हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव टेकन अ गुड पाथ, एंड द पाथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप हर जर्नी में सीखते गए, एंड यू वर वेरी नॉर्मल कि ठीक है इधर इंटरव्यू दे के देख लेते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ के देख लेते हैं, एंड आई विल टेल यू वन थिंग, एंड इवन टू द ऑल सब्सक्राइबर्स हेयर, जो आपकी जर्नी रही, लाइक you have not heard about cyber security, right? You were in networking. Right. So the same situation I was also in. Okay. I was in a development zone, and as in Okay. you like your friend guided you for the cyber security, right? So in the similar way Tapan guided me कि ये field it's good, so I switched Right. into that field, and seriously cyber security field is amazing. Job भी बहुत अच्छी है, scope भी बहुत अच्छा है, and learning path भी बहुत अच्छा है, सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ. सो आपसे आपका इंट्रोडक्शन जान के सीरियसली हमें बहुत अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आपने मुझे बताया अपना इंट्रोडक्शन, उसमें आपने काफ़ी सारे अपने सर्टिफिकेशंस एंड ऑब्वियसली अपना पूरा पाथ आपने मुझे बता दिया, बट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ आप मुझे अभी आपने जैसे पाथ बताया उस हिसाब से मुझे आप अपना एजुकेशन as well as the certifications you have done. पहला सर्टिफिकेशन कौन सा होना चाहिए if somebody wants कि मुझे भी Amazon Cloud Securities में एंट्री लेनी है, because I am good enough कि मैं इसमें जा सकता हूँ, या मैं अपनी नॉलेज टेस्ट करूँ, मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, राइट? सो what path they have to take for this? Could you please explain these, the certification as well as the education you have done for that? Yeah, okay. So from certification per se, to be honest, Amazon doesn't ask for So the any first first certification, what was your first certification? I guess if I'm not My wrong, first CEH. certification, yeah, it's I think everyone's हर एक security के बंदे का वही है CEH. That like way back, I think आज से 5-6 साल पहले CEH was the only अरे hacker बनना है कि हाँ अरे CEH करो. Yeah, So because that this is was the the basic certification. right, and I think to some extent that certification did help me क्योंकि उससे पहले मुझे वो सब technicalities नहीं पता थे. So वो for बहुत the basic learners and for the beginners, I must say this कि CEH पहला ही certification रहना चाहिए if you are moving into deep into the cyber security, right? Right. Okay, Starting so है, yeah. basic है, but it's important. Like कई लोग होते हैं अभी like now they are like top notch in their field and everything and they think like अरे CH तो क्या है, I mean फालतू सा है. But I think जो एक बंदा जिसको कभी सिक्योरिटी का उसने सुना ना हो या नॉलेज ना हो, CH is the basic thing. They should do it and they would learn something from that definitely. Right. बिकॉज जब मैं भी Okay. एज एन पर्सनल जब मैं भी साइबर सिक्योरिटी एनरोल हुई थी, सो उस टाइम पे मैं भी बहुत डर गई थी, मुझे समझ नहीं आता था, या सो तपन गाइडेड. सो द सिमिलर वे योर जर्नी इज ऑल्सो सेम. Right. एंड what are the certifications you have completed? Right now, I seriously don't remember the list. Oh I my mean, God. it's quite a It means bit of quite 10, big. 15. Yeah. So it was like there was one phase at that, like after I started my job. अच्छा, in सॉरी फॉर द Mumbai, इंटरप्शन, I- सॉरी फॉर द इंटरप्शन. आपने बोला कि सर्टिफिकेशंस यू हैव अ क्वाइट बिग लिस्ट एंड यू आर नॉट रिमेम्बरिंग द सर्टिफिकेशंस नेम्स, राइट? सो नो प्रॉब्लम, बट अगर कुछ भी जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हो. पर मेरा क्वेश्चन ये है व्यूअर्स की तरफ से कि जो आपने सर्टिफिकेशन लिया है वो सारा एक ही जोन में, मीन सारे साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन और डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी फील्ड्स हैं. right. So security इतना वाइड फील्ड है कि मेरी नॉट गलती मैं मानूंगा, बट माय non-maturity during that time was an unmaturity that I studied each and everything. Like when I started doing courses,
मैंने network forensics का course किया. I did one for cyber security, one for web application security, one for network assurance, और भी पता नहीं कितने किए. Abhi, like looking back at that point of time, I think whosoever wants to start their career in security, it's important that to select one specific thing, because अपना security बहुत wide domain है. इसमें इतनी सब चीजें, if you think of network security, everything is needing for the going for the cyber security, web right? application, right? Web application, cyber, IoT, blockchain. Now, like there are so many different fields. I mean, security audits also. So whatsoever you want, the field which you want to go in, like let's say that someone wants to go in information security, like audits. They should do CISA or CSAM or CSSP, those kind of certification. You If have somebody also is done thinking CISA. of CISA I have done, and rest क्योंकि उसके बाद I never went back into information security. I left that lane. I went into pen testing, and so I never continued CISA and all those things. All right. So उसके बाद I think if somebody wants to go into pen testing, then CEH, OSCP, then Pentester Academy, like they have quite good number of courses and certification. You should try. You're their talking about the certification. Postwigger labs, right? Yes. Yes. Right. So Our subscribers are doing that. We are teaching them, and they so are I think doing that. that is a good like Yeah. way to start. And and once you proceed, OSCP, OSCE, OSWE, these are all the pen testing related. And if you want to enter cloud, then cloud security has different set of certification. That would be, you start with the basic as cloud practitioner, then there's security specialist, then there's solution architect, that one. So these are the progression of certifications that you can do. But one thing is must, that you should find your path. Like, is it information security or pen testing or network security or cloud Yeah. security? Because like अगर आप हर चीज में पैर फैलाओगे तो एक भी चीज अच्छी एक से भी नहीं चीज आएगी, कंप्लीट बाकी नहीं सब हो रह पाएगी. जाएगा. राइट. ऑलराइट. सो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है. दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन ओनली, एंड काफ़ी चीज़ें पता चल रही है, एंड डेफिनेटली हमारे सब्सक्राइबर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे, एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है ये. माई थर्ड क्वेश्चन टुवर्ड्स यू इज़, you have shown a path of companies. First I was in Bangalore, and then I shifted to Mumbai, and then next, right? So my question is, what past experience you have for those in these companies? Okay, so past experience from my startup company. Past experience as in past experience as in जो struggle you have faced, and how you have think means in the path of struggle कि अब किस तरीके से मुझे इससे बाहर निकलना है, and how you have learned and everything. So past companies का आपका experience कैसा था, कैसे growth मिली, all these. Right. I think when you start working, the way of growing is through work only, and by self-learning. So हर एक company में, like if you take the example of Tata Communication, when I was working there, I did not knew anything about security audits. So I did some course on job training. So these were the kind of things that helped me. अगर कुछ नहीं आता तो, because mostly nowadays there are so much material, there is so much things which are available. Everything is scattered on the internet. Right. Everything is there. You just need Even to spend everything, some time, put some effort in the. even I must say everything is scattered even on YouTube. So सब कुछ है वहाँ पे. Right. Yeah, please say. I mean, I know some like people who started learning about security from YouTube, and now they're earning bug bounties, like good amount of bug bounties. I know people like that. Yeah, YouTube but से sometimes पढ़ के what वो happens, we do suggest our subscribers for bug bounty, but I guess it's more time consuming, right? Yes, it is. Because we at one can't point of sit time, no, because we can't sit on just bug bounty for a month, and if we have not earned, then how we will be surviving. So I think bug bounty is bit
confusing or difficult in terms of earning, in terms of earning I'm talking about. Earning, that I would disagree to some extent, All right. because of the reason it is not constant. But if you're good enough and you have confidence, Yeah. the Yeah, kind of that's matter. boundaries which you can earn, because like there are people who have become billionaires from bug bounties. There are people Exactly. who have, I agree. even from India, I know so many people who have earned from bug bounties, and जितना साल का एक normal engineer का package नहीं होता होगा उतना normally they earn in 2 or 3 months. Yeah, that So I this is agree. not constant. Yeah, this is not a constant source of money. Yeah. It requires patience, too much Yes. of hard work, and too much of knowledge also. If you have all these three abilities, patience भी है, knowledge भी है, and हाँ ठीक है, you can work on this. कोई हाँ. financial baggage नहीं है, you can definitely try. Yeah, for There's no, that because definitely you can try nowadays, and earn. yeah, Yes. people make this as their profession nowadays. Bug bounty is a professional thing now. Yes, I agree. All right, Yeah. so my third question is finished, and you're given a good answer to this. My next question is now something going on security testing. So in the last Yeah. companies, as you said that you have done security audits, 1200 security audits or sometimes 500 something you said. So what tools you have specifically used in those companies? Could you please reveal Okay, those tools? so there's nothing, it's all like Yeah. open source, everyone knows it, I think. Yes. So for Our subscribers, security, yeah, definitely. That will be yeah. very helpful for our subscribers. Yes. Okay, so for security audits, there was no tool as such at that point of time when I used to do it. But now, when I think of it, yes, there are some cloud services which can be used for network security audits right now. Like there are many services which can be used. And from web application security point of testing, like everyone knows about burp suite, that is like one of the classics. Then Metasploit for exploits and everything. Then Kali Linux, that is basically like भगवान है उसी पे सब करते हैं. Wireshark and Map. So these are like all normal basic tools that everyone use. And then for vulnerability management, Nessus, Qualys Guard, yeah. And there were a few open source also, which I don't remember now. But yeah, I think tools की बात करें तो there are too many tools, and most of people who are in security, they are aware of that. Like बर्ब सूट हर किसी को पता है, काली लिनक्स जिसको नहीं भी या पता होगा काली उसको पता है, लिनक्स हाँ इज द हैकिंग के लिए ऑपरेटिंग काली सिस्टम एंड लिनक्स. इसमें काफ़ी Yeah, सारे टूल्स अभी भी वही हैं जो पहले थे. राइट right, राइट राइट. right. ऑल राइट. So I think these are all the most of it. एंड व्हाट But अबाउट द परचेज हर टूल्स एक मीन्स द जॉब के लाइसेंस लिए टूल? so being in the security and hacking community, we don't like to buy tools. So अगर नहीं है तो you mod that secure like tool and use it. So I have Yes. never purchased any tool till now. Okay. So now my next question going to be very interesting. Like if just consider me as a subscriber or as a student of yours, like what process you will suggest me to go into the Amazon, means how I can apply or how I can crack Amazon interview. Okay. So it can be, so Amazon may there are different fields with related to security. There Yes. could be development side, like let's say secure code and everything. Like you write code, you have a place for that also. If you're into security pen testing and offensive security, there is a place for that also. And if you're into just cloud security, there are teams for that also. So har ek team mein there are places. And how to prepare for it, I'll just tell from the perspective of security, like cloud security and the security engineer perspective. So you need to have a basic knowledge of cloud at least. What is it? अगर तुमने cloud practitioner course किया है, then it's like quite good. अगर नहीं भी किया है, if you have the knowledge about cloud, that is good enough to start with. And there are certification like
security professional, these kinds of certifications. You can prepare for that. Basic knowledge, you can get all that. And from security team perspective, if you Yes. have CEH or OSCP, these are must. And nowadays, along with just the knowledge of tools and like OVAPs and everything, one of the most important thing which I have felt after joining this field is you should have code knowledge. कोड आजकल आना बहुत जरूरी है. Be it Python, be it Java, something you should know. Because nowadays, even when I take interviews for my team, sometimes I don't look like हाँ code का knowledge है कि नहीं. Basic knowledge code का, So whether they are what able to basic understand code questions you flow. ask from your like teammates? Could you just suggest so that that will be very helpful for the subscribers here? So from questions perspective, I'll just tell the brief. What do Yeah, we please, look please. for? We look that network, like even from if you are joining the security team, you should know the basics. Basics अच्छे से Basics. आना चाहिए. Basic Networks, clear रहने चाहिए. network के basics, yeah, network के basics. Because Coding I के know basics, people, right? हाँ, I know Network people codings. Yeah. कि जो अभी like they are like I took some interviews where they're like 10-12 years but उनको basic नहीं पता है. वो Yeah. छोटी चीज प्रोटोकॉल कौन सा क्या करता है, कैसे उसे एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो नहीं पता है. जो बेसिक सिक्योरिटी की नहीं पता है. तो इवन तो दैट इज फाइन. आई मीन व्हेन यू ग्रो यू लाइक कभी कभार नहीं याद रहते, बट दैट इज मस्ट. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट ऑन. बेसिक्स शुड बी सॉलिड. सिक्योरिटी के बेसिक्स, कोड के बेसिक्स, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, दीज आर मस्ट. अगर आपने लिखा है अपने सीवी पे दैट यू नो OWASP, you should know OWASP in and out. If you have written you know Python, you should know the Python logic. कैसे अगर like if I give you some code during the interview, you should be able to find out कि हाँ इसमें vulnerabilities क्या है, इसमें क्या like कोई Okay, so exploit like you people means obviously the interviewers give the code and Yeah. then the obviously the students or somewhere employees need have to Right. find out the bugs in their code, right? Yes. So depending So they on will be what they will be background. using the tools or like they will be finding out the manually. No, manual. This is not tools, like not the Manually static find one. करना रहता है. Yeah, ठीक है. manually, like we'll give you a piece of code and we'll tell you like tell us कि इस code अब में इसमें what क्या bug है? vulnerabilities you see. Okay, Yeah, क्या okay, bug okay. है, क्या vulnerabilities है. तो आज like that not used to be the scenario, I think, way back, but now seeing the trend, I think that is one of the must required like knowledge that you have. All right. Security basics आना चाहिए, network basics आना चाहिए, along with code का knowledge होना चाहिए. That अगर आपको नहीं आता है, start learning now. Start learning Python. Start learning JavaScript. JavaScript तो चलो it's a bit difficult. It takes time. Start learning Python. Python easy है, and it helps you because when you join any company, it's not just the security tools or security concepts that you would be working on. You would be building various things. You would be building tools. You would be building automation solutions. So ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए उस time पे. Great. Thank you so much for making us understand like क्या क्या चीज़ें required रहती है in during the interview, right? Okay, so my next question. ऑल राइट. वैसे जो भी मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं उसके पहले ही आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बट अगेन व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड? ओके, सिंस दिस इज माय क्वेश्चन सो आई हैव टू आस्क इट अगेन. What skills are required before we apply for the security engineer job? Security engineer job. You can trap it into the networking, you can trap it into coding, you can trap it in application Yes, same testing, things, right. any. Yeah. Okay, let's take the example of I think security only, like not. So what prerequisite one should follow? One should follow first and basic thing.
जो सीवी पे लिखा है, the things that you have written, जो आपने you सीवी should पे. know them. सो सब्सक्राइबर्स लिसन should इट know केयरफुली. अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं देन डेफिनेटली आपका सीवी एक तो प्रॉपर रहना चाहिए, एंड जो सीवी में लिखा है वो आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, राइट, इन एंड आउट. Is right, is right. You ओके should ओके. know in and out. You should understand that because sometimes like people who give interviews, they write big things. अगर ये project किया मैंने. हाँ, राइट. When you ask them But कि ये what project में part तुमने of क्या that project security you क्या have किया? performed, right? So we just have परफॉर्म to कैसे focus. किया, तुम्हारा रोल क्या था, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तुमने क्या किया, क्यों किया, क्या टूल्स यूज किए. लाइक व्हेन समबडी इंटरव्यूज यू, they basically dig your CV, dig if you know the basic, dig if you, जो अपने skills section में लिखा होता है, जो आपको नहीं भी आता है वो भी लिखा होता है, they dig into that. So you should know all those skills that you have written on your CV with respect to security. अगर आपने ISO 27000 के लिखा है अपने CV पे, you should know कितने controls है वहाँ पे, और controls में क्या क्या आगे सब controls है, you should know all those things. All right. Thank you again. So my next question going for like challenges faced. What challenges you have faced, or any normal one face in the companies Okay. during the job. Companies, I'm talking about only in cybersecurity. So what struggle or what challenges one faces, actually faces. yeah, आपने भी फेस किया होगा, right, आपके फ्रेंड ने भी फेस किया होगा, एंड right, एवरीवन. right, right. जब भी हम किसी के साथ बैठते हैं कहते हैं कि यार हाँ यहाँ तो ये चीज़ तो मेरे भी बहुत दिक्कत आई थी. सो इन दिस काइंड ऑफ, Right. सो व्हाट इज दिस? या. I think basically everyone who is in security, and Tapan would also agree with me, especially Yes. security में क्या है कि सिखाते नहीं है लोग. I remember when I started, अरे कोई भी, like if you want to learn something, like let's say that you want to exploit SSRF, जब कोई vulnerability, उसका एक process है, उसकी एक technique है, वो सीखना मुश्किल है. You can read the docs, you can, because let's see, जैसे मैंने खुद से सीखा, so I'll tell you this thing. So when I learned it by myself. Documents पढ़े, YouTube देखा, blogs पढ़े, then I learned. But वहीं पे जब मेरी टीम में there was a new junior who joined, उसको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ी. I taught him. राइट. So that is the difference. I might have spent 30 hours to learn that security vulnerability कैसे exploit करना है, in comparison to my junior who just joined and I told him, see, this is the process. वो चीज एक होता है ना कि कोई तुम्हें सिखाए, वो चीज मिसिंग होती है अपने सिक्योरिटी डोमेन में, स्पेशली बिकॉज हर कोई बोलता रहे यार ये ट्रिक है मेरी, इसीलिए ये क्यों. सिर्फ यही रीज़न है हमने आज आपको अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है, क्योंकि जो आपने ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन लगाया एंड स्ट्रगल यू फेस्ड, आप जो एक्सपीरियंस देंगे अपना यहाँ पे व्यूअर्स को, सो डेफिनेटली दैट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम. yeah. राइट. And I have also seen things like कहीं कोई फ्रेंड है, जैसे कोई हाँ. उसने कोई vulnerability किया एक्सप्लॉइट, एंड तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे किया. Just tell me. समटाइम फ्रेंड सेज अरे पता नहीं हो गया होगा. नहीं बताते हैं, they don't even tell me the tools. ओ वाओ, I have been सबकी कहानी एक जैसी, कोई भी नहीं बताता. ठीक है. हर कोई स्पेशली सिक्योरिटी फील्ड में सोचता है कि अगर मुझे आता है तो मुझे ही आना चाहिए, Right, किसी right, को नहीं right. आना चाहिए, because that is लेकिन my ज्ञान job. बांटने से I ही think बढ़ता that है, should बनता not है. be. वो चीज वो अंडरस्टैंड नहीं करते, लाइक हाँ मेरे पास ही रहना चाहिए. सो आई थिंक सिक्योरिटी फील्ड में ये बहुत ज्यादा चीज है. हाँ, ये चीज़ तो है. ठीक है. So I think my last question, but since podcast is not going to end because now Tapan will come and join the session. So my last question from my end is, yes. So it is easy. Is this easy in cybersecurity domain I'm talking for the fresher to get the job? For freshers, okay, To get the job in cybersecurity. Is this struggling or is this easy? to be honest, it's not like a walk in the park.
it is difficult, but it is not impossible either. आजकल के time में especially So because if anyone is there who can like who has completed the degree and they have he or she having this certification, the cybersecurity certifications, so will it be comfortable for them to get the job in the fresher end? yes, right. So like us, especially in today's time, every big companies like even Amazon has programs like that where they hire Yeah, every interns big companies have the directly programs. from directly from colleges to teach them and like develop them. So आजकल वो बहुत अच्छी चीज है, पहले टाइम पे ये नहीं होता था। आज उस टाइम पे इंटर्न लगना भी कहीं पे लाइक मांगना पड़ता था, प्लीज कोई तो जॉब दे दो, इंटर्न का ही दे दो, सिक्योरिटी में सीखना है मुझे, मुझे कुछ तो सिक्योरिटी का जॉब। तो बट आज के टाइम पे वैसा नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। लाइक हर एक कंपनीज के प्रोग्राम है, दे हायर इंटर्न्स, दे हैव प्रोग्राम्स लाइक स्पेशली कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स for security, for other fields also, where people can join, they can learn, and they can hands on, get their hands on the Right. job itself. So that इतना मुश्किल नहीं है, but impossible ही नहीं है। You should learn the things, you should get the skills and get on to these kind of programs or any internship or these kind of things which are there. So I think that would be quite good for them. And even nowadays, like there are so many open source projects also, or CTF. Yes. अपने टाइम पे उस टाइम पे इतना नहीं ये कुछ होता था था, ही अभी नहीं, तो right, इतना right. CTF है, या अब you तो can सब do कुछ capture है. the flag thing, open source projects, you can build your profile, and when you apply for any job, these are the things which they see. So yeah, I mean, it's not that difficult, but not that easy also. All right, all right. Yes, So people can give you time. That's it. yes. So thank you so much, Varun, for just describing your journey, your certifications, your everything. बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगा, एंड डेफिनेटली जो व्यूअर्स हमारे अभी तक लाइन पे बने हुए हैं उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. ठीक है, सो आई थिंक and thank you so much for giving so much time. Let me call Tapan and then he'll join the session. Thank you so much. Please be Thank you. online. Yeah. तो भाई कैसे हो गया सेशन, काफी कुछ भाई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि है ना, मतलब कि अमेज़न से बड़ा इंटरव्यू चल रहा है इतना क्वेश्चन तो उसमें नहीं पूछे होंगे जितने इसमें पूछ रहे हैं हम लोग पॉडकास्ट में। पर चलो, बट ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। एट लीस्ट ये चीज बाकी लोगों को हेल्प करेगी। द हाँ। थिंग्स व्हिच आई हैव सीन, वो गाइडेंस जो मेरे पास नहीं था, मे बी सम अदर पीपल माइट गेट दैट गाइडेंस। यस तो हमारा पर्पस ये रहता है कि क्योंकि ना अपन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करा, तो बाद में अपने सब्सक्राइबर को एक बार किया ना, वरुण भाई और हम दोनों ने साथ में एक ऑडिट भी करी है, ठीक है ना तो उसमें काफ़ी एंजॉय करा था हम लोगों ने। और उसके बाद फिर भाई है ना अपना अलग पाथ, और बाद में एक और चीज़ की ना, भाई ने पहले PwC में भी काम करा हुआ है, सो वो भी एक एक्सपीरियंस है। और उसके बाद फिर अब अमेजन के अंदर तो काफ़ी कुछ आपने करा हुआ है ना, तो अब ये क्या है कि अपना ये स्ट्रगल है, मतलब लोगों को दिखता डायरेक्टली अपन अमेजन में आ गया, बट उसके पीछे का बहुत भयंकर हार्ड वर्क है, डेली की पढ़ाई है, डेली का अपग्रेड है, और जाने कितने इंटरव्यूज फाइट करना है। तो वो चीज़ की जर्नी जो रहती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि वही अपने पॉडकास्ट के थ्रू आप मुंह से बोलें, ज़्यादा बढ़िया रहे। ठीक है, तो भाई अब मेरा जो क्वेश्चन आने वाला है 9th नंबर का क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, जो लोग अभी ना साइबर सिक्योरिटी मूव ऑन करना चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं, बहुत स्कोप आने वाला है। सो एक मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इज इट योर पैशन और इट्स जस्ट एन ऑप्शन। कई बार होता है कि यार ठीक है यार कुछ नहीं मिल रहा, या फिर पर्टिकुलर अपन को ये अच्छा पैकेज मिल रहा है तो इसको अपन अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा रहता है। एक तो रहता है कि यार मेरे को मतलब अंदर से ही पैशन है बॉस, इसी में जाना और यही करना है, फर्स्ट एंड लास्ट यही है। तो क्या है आपका ऐसा? सो आई थिंक मेरे केस में मुझे तो लाइक एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे तो नाम भी नहीं पता था सिक्योरिटी में होता क्या है। अच्छा। दोस्त के थ्रू सुना कि अच्छा सिक्योरिटी, उसने CCI सिक्योरिटी किया था, उससे सुना। उससे सुनने के बाद द थिंग्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, तो उस टाइम पे एक अंदर से आया पैशन, अरे यार ये अगर बंदे ने चीज किया, इसको एक्सप्लॉइट किया, जिसको हैक किया, कैसे किया, सही बात है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या था। तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना, यस वो एक बहुत बड़ी चीज है, विच लेड टू माय पैशन कि अरे भाई सिक्योरिटी का सीखना है, यस सिक्योरिटी में क्या होती है, उसी चीज के पीछे। सो मेरा स्टार्टिंग से लाइक व्हेन आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई एंटर्ड माय सिक्योरिटी डोमेन,
I was like कि I just don't want to restrict to one domain because at the end I want to reach at that point of time जहाँ पे मैं security को lead कर सकूँ. यस यस If tomorrow I am a CTO or something, I should know information security audit क्या होता है, हाँ ISO 27000 क्या है, I यस should know PT कैसे होता है, I should know bug bounty कैसे होता है, यस I should know cloud security कैसे होता है. यस यस तो ये सब चीजें उसमें मुझे पता होनी चाहिए. तो आई थिंक यही मेरा पैशन बोल सकते हो, क्यूरोसिटी बोल सकते हो, जो बैक एंड प्रोसेस है, चीजें हैक कैसे होती है, एक्सप्लॉइट कैसे होती है. यस यस I geek over that technology. So I think ग्रेट this is something which led me to let's do this. यस Let's join security domain. आपने बिल्कुल सही बोला भाई कि है ना काफ़ी बार है ना सीटीओ लेवल के पर्सन को भी मतलब पता नहीं होता वीएपीटी में अंतर क्या होता है. लाइक हम लोग भी जब ऑडिट्स कर You know very well. उनको नहीं पता, है ये उनके लिए सब वीएपीटी. हमारे पास एक आया था ऐसे एक क्लाइंट था, उसने बोला कि यार तपन अपन को वीए नेटवर्क का वीएपीटी करना है. मैंने पूछा, मेरा बॉस ये बताओ कि वीए करना है कि पीटी करना है. अरे वीएपीटी एक ही तो है. मैंने ना 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 वीए के अंदर ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं और फिर स्कैनर की रिपोर्ट देंगे और पीटी के अंदर मैनुअल टेस्टिंग होगी. यार दोनों में अंतर क्या है? तो कई बार सीटीओ लेवल के लोगों को पता नहीं होता है. तो इसलिए आपने सही बोला कि बेस जो आपका स्ट्रांग अगर रहता है, आपको हर फील्ड का नॉलेज रहता है, तो आप हायर लेवल पे जाके काफी कुछ कर पाते हैं. ठीक है भाई. तो बाद में जाके ये पैशन ही बन गया फिर जो आपका है एक तरीके से. अभी स्पेशली अभी हाँ. आई थिंक सिंस द टाइम आई हैव जॉइंड क्लाउड सिक्योरिटी, हाँ. क्लाउड सिक्योरिटी में इतना है भाई सिक्योरिटी, लाइक मतलब कि मैं सीखते सीखते थक जाता हूँ, चीजें खत्म नहीं होती. मतलब कि अगर मैं सुबह से लेकर रात तक भी बैठा रहूँ ना, हाँ. स्टिल आई कांट फिनिश दैट. इतना सब कुछ है सीखने को. सही बात, सही बात. तो अपन है भी लालची लोग, अरे ये भी सीखते, ये भी सीखते, ये भी सीखते, सब कुछ सीखने का अपने को. तो एक तरह से अच्छी चीज भी है. बट सही है. चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया है. एंड मतलब एक चीज और क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे. 10th नंबर का पॉइंट है हमारा, आफ्टर वीएपीटी नाउ इन क्लाउड वाई. मतलब कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि यार क्लाउड के अंदर जाना अपन को, पहले आपने वीएपीटी कर रहे थे जैसे मैंने देखा आपको, है ना, अपन लोग साथ में ऑडिट करा तो वीएपीटी में थे अपन. तो उसके बाद आपका आया कि क्लाउड में चलना है, तो वीएपीटी में आप लोग जनरली नेटवर्क और है ना वेब एप्लीकेशन मोबाइल ऐप इन्हीं में उलझे रहते हैं. क्लाउड एक डिफरेंट डोमेन है और बेसिकली उसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जा सकते हैं. तो ये कैसे दिमाग में आया एकदम से? So I think that was during PwC time पे I was doing audit security or audit था VAPT and some security audits along with that. तो उस time पे like it was one of the biggest I won't name the company, वो इंडिया का one of the biggest company है, उसका audit चल रहा था. उसमें they had one part जिसमें they were like हमारे कुछ instances cloud पे है, or you would have to check security configuration of those. तो वो चैलेंजिंग टास्क बॉस. हाँ, क्या है ये? वो उस टाइम पे लाइक मैंने पहली बार सुना, इंस्टेंसेस पता ही नहीं होता. सही है. मेरे को पता ही नहीं था इंस्टेंस है क्या, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन तो दूर की बात है. सो वो टाइम था आई थिंक, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वाज लाइक अरे ये चीज नहीं पता, आई नीड टू लर्न दिस. वो पॉइंट था व्हेन आई डिसाइडेड ओके क्लाउड सिक्योरिटी जानना है, क्योंकि पीपल आर मूविंग टू क्लाउड. अब हर कोई सर्वर रूम नहीं रखने वाला है. यस यस. कोई भी सर्वर रूम, कोई भी डीसी कुछ भी नहीं बना डेटा सेंटर में कुछ भी नहीं. क्लाउड वही. तो आई थिंक वही एक पॉइंट था, वो एक पर्टिकुलर ऑडिट जब मैं कस्टमर का कर रहा था, एंड दे हैड सम लाइक इंफ्रा इन क्लाउड व्हिच ट्रिगर्ड मी, अरे सीखना चाहिए. तो आई थिंक उस वजह से आई बेसिकली joined this cloud domain, cloud security. Great. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही था बेसिकली, व्हाई यू हैव चूजन क्लाउड सिक्योरिटी एज अ करियर, क्योंकि आपको लगा कि रिक्वायरमेंट है आगे. और ऑब्वियस सी बात है, अभी जितने भी अपने देखेंगे कि कोविड के बाद स्पेशली कि ना डेटा सेंटर मेंटेन करना मतलब कि बहुत सारी चीजें करना, बहुत सारी. मतलब एक तो रैपिड इलास्टिसिटी नहीं है आपको. मतलब अगर आपको चाहिए कि कल मुझे इतना और बड़ा चाहिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बंदे की रिक्वायरमेंट है. कूलिंग इफेक्ट बहुत चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं है, आपको फिर एक बैकअप डीसी और रखना पड़ता है. तो मतलब कितना ही रखोगे आदमी, और वो छोटी कंपनी के लिए पॉसिबल भी और बिग कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं आज तारीख में. ठीक है. अभी तो लाइक बिग कंपनीज में लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एवरीवन आर ऑन क्लाउड. सो अभी तो बिग भी हो रहा है. Nobody wants to go through the hassle of data center and maintaining and everything. Yes. ठीक है. नाउ एक और चीज की ना भाई, अपन मतलब पहले अपन इंडिया में थे, है ना, बेंगलुरु से फिर मुंबई शिफ्ट हुए, और फिर मुंबई के बाद अपन कहीं और निकल लिए. तो अब है ना मतलब इंडिया, मतलब ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो है ना इंडिया के बाहर अपना करियर प्लान करने की सोच रहे हैं. तो इंडिया के बाहर जाने के बाद आप साउथ अफ्रीका के अंदर हो अब,
तो अब इंडिया आने का क्या मतलब, चले वीकेंड में या फिर हो गया भाई? Honestly बोलूं, like I mean I do get good offers from India जो कि बहुत अच्छे हैं compared to like what I was getting way back. But एक चीज which stops me going back to India would be work culture. वर्क Like करता I have worked in India, the kind of manager और directs का एक जो relationship होता है, वो जो culture होता है, यस यस, वो इंडिया में और बाहर बहुत बहुत डिफरेंट है, डिफरेंस सही है। बहुत डिफरेंट है। देयर ए लाइक बाहर जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, बट लाइक आई हैव फ्रेंड्स इन फेसबुक, आई हैव फ्रेंड्स इन गूगल, मैं खुद अमेजोन में हूँ। सो वो जो एक रिलेशनशिप है ना, वो आपको इंडिया में नहीं मिलता। इंडिया में क्या होता है, अरे मेरा डायरेक्टर है, जितना काम करवा सकता हूँ उससे करवाओ करवाओ जितना बस मैं इवन आई डू रिमेम्बर, मैं इंडिया में था जब मुंबई में वीकेंड्स पे आई एम डूइंग ऑडिट्स, सैटरडे संडे नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद इतना काम करने के बाद भी रिस्पेक्ट भी नहीं, लाइक वो बेइज्जती और भी और करो और भी करो। तो सही वो है, चीज कभी खत्म नहीं होती है। वो एक मेंटेलिटी है ना कि जितना काम निचोड़ो इंसान से उतना कम है, वो इंडिया में अभी भी है। अभी और भी है, बाहर अभी भी आके है, ट्रूली बिलीव। यही चीज यही चीज खत्म हो जाती है। अगर बाहर आके मेरा 5 बजे काम खत्म हो रहा है तो खत्म हो रहा है, उसके खत्म, बाद अगर मेरे मैनेजर का मैनेजर भी मुझे मेल करे, आई वोंट बी ऑनलाइन। सही है, तो सही वो है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है जो इंडिया में नहीं और बाहर है। आई थिंक मे बी आई वुड स्टिक टू दैट कल्चर फॉर सम मोर टाइम। सब मोटा है, मे बी 5 6 7 8 साल के बाद आई थिंक कि चलो शादी इट्स करके टाइम उधर ही घर बसा लेने का नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा आपने, मतलब एक्चुअल में जो आपने बताया ना कि वर्किंग कल्चर जो अपने, उसको थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे अपने साइबर सिक्योरिटी अपन लोग भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के बाहर जाके अगर आप काम करते हो तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है एज़ कम्पेयर टू अपने यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा थोड़ी दिक्कत रहती है। पर सबके साथ नहीं बोल रहा, पर हाँ काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चक्कर में और इसी इंडस्ट्री खराब हो जाती है। तो बाहर जाके साइबर सिक्योरिटी में इज्जत मिलती है भाई, ये बात तो बोला आपने सही एक एनॉर्मस रिस्पेक्ट है। अगर यस बाहर तुम लाइक जाके बोलते हो कि ओके यहाँ पे तुम तुम्हारे कलीग को भी बोलते हो यू वर्क इन सिक्योरिटी डोमेन और सिक्योरिटी फील्ड, देयर इज एनॉर्मस रिक्वेस्ट लाइक रिस्पेक्ट कि अरे बाबा यस, सिक्योरिटी में ही नोज थिंग्स। इवन योर मैनेजर, योर सीनियर्स रिस्पेक्ट यू, अरे ही वर्क्स इन सिक्योरिटी, ही हैज गुड नॉलेज। तो वो ये एक चीज रिस्पेक्ट आई थिंक टू सम एक्सटेंट बाहर लाइक अपने इंडिया में नहीं है अभी। सही है, सही है, इस पे हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा हाँ नहीं, ऑब्वियसली बात है, हमारे जो ये पॉडकास्ट रहेंगे ये हम लोग सीटीओस वगैरह को भी सेंड करते हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मेरा मतलब मेरा मैनेजर, मेरा एम्प्लॉय ऐसा देख, ऐसा सोच रहा है, सो आई नीड टू वर्क ऑन इट। एक है ना फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि एटलीस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ में जुड़ के काम कर सकें। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ना, व्हाट नेक्स्ट स्किल यू वांट टू लर्न इन साइबर सिक्योरिटी। भाई अपन ने काफी कुछ तो पढ़ ही लिया है, ठीक है ना, अब कुछ बचा नहीं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो अपन ने खोला नहीं होगा, वो बात अलग है। उसके लास्ट के क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिए होंगे, पर बाकी अपन ने पूरा ऑलमोस्ट कर लिया है। तो कोई ऐसी नेक्स्ट स्किल किया, क्योंकि अपन कर रहे हैं डेली, अपन काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है साइबर सिक्योरिटी इज नेवर, मतलब एंडिंग नहीं है लर्निंग का। तो अब ऐसी कौन सी स्किल आपने को लग रहा है कि यार ये चीज अपन को पढ़ना और चाहिए, अपन इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए? Okay, so अभी current trend को देखते हुए, I have 3 things in mind which Okay. I am learning. I am in the process of learning, and I would like to learn more. Okay. First would be security automation. ऑटोमेशन, Like वेरी security automation, like projects or things that I can build with respect to security and automation. Like Okay. I want to combine both these things, work on projects and learn these skills. जो मुझे ये चीजें like security automation projects पे जब tool बनाने पे help Yes. करे. So this is like currently I'm working on like अपने internally company में I'm working on certain projects and I want to learn those things, learn Okay. those skills जो मुझे help करेंगे. First is this, and from security point of view, IoT as well as blockchain security ब्लॉकचेन audits, सिक्योरिटी, इनका penetration testing. I have worked a bit on this, but still I think in the coming time, blockchain is already like अभी तो चल ही रहा है. चल ही रहा है, This is बिल्कुल। अभी इतना ज़्यादा boom नहीं हुआ है, but Yes. still it is there. IoT and blockchain का. And then next would be to learn a bit more about AI. AI. What are the security implications of AI? Yes. What security risk it can pose? इट कैन, Like we have chat GPT, we have BART, लेकिन इसका security implication क्या होगा? यस यस, Although अभी
क्योंकि ये स्टिल अभी बहुत ज्यादा नया टॉपिक है. इवन ओपन एआई माइट नॉट हैव थॉट कि इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होंगे. हाँ, अभी तो पहले डेवलपमेंट प्रॉपर कर ले, उसके बाद की बात है सिक्योरिटी देखा जाएगा. Right, because even like if you remember the father of AI who was working in Google, उसने भी recently quit किया Google to talk about what are the security implication of like AI which is there. Yes. And from his view, आने वाले time में there would be a bigger implication security risk. Okay. And when he was being asked कि अरे like solution बताओ इसका क्या है, and he was like मुझे solution नहीं पता but इस security risk है आने वाले time में. Yes. And people should start thinking about it. So I think we should also think AI के perspective से भी क्या security risk होने चाहिए. You should learn the skill of AI. So machine learning ये सब चीजें अपने को, बिकॉज अपना फील्ड ऐसा है कि एवर पेसिंग है, कुछ Yes. इसमें रुकता नहीं है. हाँ. अगर तुम नहीं लर्न कर रहे हो यू स्टे बिहाइंड, तो आउट ऑफ इंडस्ट्री हो जाओगे आप. out of industry हो जाओगे. So you Yes. would have to keep yourself in the pace with that. Learn AI, learn a bit about basic security things, blockchain, IoT and security automation. Automation आने वाले टाइम में security का जॉब भी में भी खा सकता है. बिल्कुल. Because अभी पीछे लाइक आज से 5-6-7-8 साल पहले वी नेवर थॉट कि अरे एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन होगा जो स्कैन भी करेगा, रेमिडिएट भी करेगा. बट अभी करंट टाइम में ऐसे प्रोसेस है, ऐसी सर्विसेज है जो सिक्योरिटी ऑडिट्स भी करती है, रिपोर्ट भी आपको दे देगी, आपका इंफ्रा भी चेक कर लेगी. सॉक सेंटर्स में जो प्रोडक्ट्स अभी चल रहे हैं उसके अंदर सेम ऐसा ही है कि वो VAPT सब करके देता है. ट्रू. तो आने वाले टाइम में ये आने like this is happening right now, so you should learn about these things. Yes. So I think यही मेरा ऑब्जेक्टिव है currently अभी. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मतलब हाँ, मतलब आपने बताया कि भाई IoT के अंदर है ना, अभी अपन टेस्टिंग की बात करें तो मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो IoT टेस्टिंग करते हैं. और इवन है ना कोई फ्रेमवर्क भी अपना प्रॉपर सेट नहीं कि बॉस इन सबको यूजर, क्योंकि अभी अपन क्या करते हैं वायरशार्क यूज कर लो, प्रोटोकॉल एनालिसिस कर लो उसके अंदर. मतलब अभी है ना बेसिक पार्ट पे काम चलता है, पर है ना अगर अपन बोले ना कि हार्डकोर जो IoT टेस्टिंग होता है जो चिप लेवल पे जाकर, वो चीज़ अभी नहीं आई है. इंडिया में नहीं होता है, बट आई हैव सीन आउटसाइड, आई हैव सीन इन यूएस देयर आर फ्यू सिक्योरिटी रिसर्चर्स हु डू दिस. यस. जिस लेवल पे वो करते हैं आई थिंक इंडिया में अभी उस लेवल पे नहीं होता. नहीं है. स्लोली एंड स्टडली इट माइट कम. यस, बिल्कुल बढ़िया. अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो जैसे आपको चांस मिला, जैसे चांस कंपनी देती है, पैसा तो पूरा देती है कंपनी सर्टिफिकेट का, ठीक है ना, तो कौन सर्टिफिकेट आप निकालना चाहोगे? और एक और चीज़ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये ना इंडिया के बाहर सर्टिफिकेशन की वैल्यू स्किल से ज़्यादा है या फिर ना सर्टिफिकेशन की स्किल है बढ़िया तो भाई कोई दिक्कत नहीं सर्टिफिकेट का. तो ऑनेस्टली सेइंग स्किल होना अच्छी बात है, बट कुछ जगह पे सर्टिफिकेशन इज रिक्वायरमेंट. यस. अगर नहीं है तुम्हारे पास, बिकॉज आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स बड़े बड़े सर्टिफिकेशन है उनके पास, बट दे डोंट हैव द नॉलेज. यस. इंटरव्यू में जाएंगे, वो SCP भी है, SSP भी है, सब भी है, बट नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज नहीं नॉलेज उतना. नॉलेज नहीं, सही है, नॉलेज नहीं है. तो कुछ जगहों पे लाइक बिकॉज बिग कंपनीज जैसे गूगल ये सब दे डोंट लुक फॉर सर्टिफिकेशंस एज इन है तुम्हारे पास, इट्स अ गुड थिंग, गुड टू हैव, बट इट्स नॉट नेसेसरी थिंग. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज व्हाट दे लुक फॉर. यस. बी इट गूगल, बी इट अमेजोन, बी इट फेसबुक, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो चीज है, तो सर्टिफिकेशन आई डोंट थिंक सो मायने रखते. बट हाँ, ये सर्टिफिकेशन प्रूफ करते हैं कि तुम्हें कुछ आता है. तो अगर तुम ऑन योर पाथ इफ यू डू दोस थिंग्स, दैट्स अ गुड थिंग. क्योंकि बेसिकली कोई ना सर्टिफिकेशन दिखाता है कि आप कौन से लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होल्ड कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा. जैसे आपने OSCP कर रखा है, सो आपको अब उसको पता है कि एक्सप्लोइटेशन के बारे में पता होगा, AD के बारे में पता होगा. और अगर वो आपसे AD पूछे और आप बोलो कि AD का मतलब मुझे नहीं पता, A और D से पूछो, देन इट बिकम अ प्रॉब्लमेटिक. ये तो सही बात है. एंड आई थिंक कमिंग टाइम में I had one certification which I want to do. It's although not related to security as in like
क्लाउड सिक्योरिटी, बट CISSP आई वांट टू डू दैट, CSSP बट उसके लिए टाइम देना पड़ता बहुत है, और टाइम टाइम इज ओनली क्रंच। भाई, टाइम छः का छः ही एक छः छः issue महीने है मतलब सबसे हमने बड़ा। हमने कुछ लोगों से बात भी करी है, उनको हम लोग हमारे चैनल पे भी लेकर आएंगे। बेसिकली इस चैनल के ऊपर हम लोग अभी जैसे लास्ट जो हमारा एक और पॉडकास्ट था वो सिस्को के अंदर नेटवर्क इंजीनियर है, उन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली OSCP भी क्रैक Okay. करा, तो अपन उनकी पूरी जर्नी पूछी कि भाई सर्टिफिकेट तैयारी कैसे करते हो। ऐसे एक CISSP वाले बंदे से मैंने बात Right. करी थी, इज अ वेरी सीनियर गाई, तो वो शायद आपके बाद नेक्स्ट उनका ही पॉडकास्ट रहेगा। तो उन्होंने बताया भाई 6 महीने पढ़ाई करी मैं मतलब भाई इस एज में पढ़ाई करना True. कि भाई, क्योंकि उसमें सब चीज़ आता है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर करता है वो। Yeah. मतलब ये आपको True, VAPT true. आए ये मेरा ज़रूरी भी नहीं है। सब, मेरा भी रिसेंट एक फ्रेंड ने किया था, आई थिंक 1 साल पहले। 6 महीने सुबह से लेके रात के 9 बजे तक वो काम करता था, उसके बाद काम के बाद ही यूज्ड टू सिट इन ऑफिस एंड स्टडी दैट। स्टडी दैट, इसके यस। लिए डिवोटेड टाइम चाहिए, और ये वैसा भी नहीं है कि खरीद सकते हैं वैसा भी कुछ नहीं है, वैसा वैसा भी नहीं है, कुछ बिल्कुल। नहीं, वैसा भी नहीं। सो यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। उसमें ऑलमोस्ट पूरा सब चीज़ें कवर कर ली, मतलब कोई स्पेसिफिक एक पूरा चीज़ नहीं, सब पूरा चीज़ आ गई ट्रू उसके अंदर। ट्रू ये उसमें पूरा दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो आई एवरीथिंग। थिंक उसके लिए अगर टाइम मिलेगा तो आई वुड प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन आपका CSSP हो सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 15 जो है मेरा, कि व्हाट इंस्पायर यू इन द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, सबका अपना अपना होता है कि भाई मुझे एक नेम चाहिए, या फिर मुझे ये कूल जॉब लगती है। लोग बोलते हैं कि ना आई एम एन हैकर, तो लोग पहले पूछते होंगे भाई फेसबुक आईडी हैक करनी आती नहीं आती। ओके, तो आई जस्ट टेल यू, आई थिंक मैं भी खुद भूल गया था, अभी आपने बोला फेसबुक आईडी हैक करनी है तो मुझे एक याद आया। यस। तो मेरा कॉलेज में एक कलीग था, मेरा क्लासमेट था, उसका नाम था रुद्रा रुद्रा करके हम उसको बुलाते थे। ओके। एंड ही वाज क्वाइट गुड विद दैट। आई थिंक 2009 और 10 में फेसबुक का सिक्योरिटी वाजंट दैट टाइट, ओके। and there was one option to reset the password is like 3 बंदों को फ्रेंड्स को लिंक हाँ जाएगा, हाँ हाँ। and अगर they do it and you can reset your password. So he used to do that for some of like classmates and all, यस। and he knew few of other things. You know, उस टाइम पे सिक्योरिटी था ही नहीं, तो ना ये नहीं था। छोटे छोटे हैक करता था वो। हाँ। So I think that was the point where I got like apart from the security thing which happened me during the working time, यहाँ से मेरा थोड़ा curiosity was like, अरे ये हैक कैसे करते हैं, सही है, इसने सही। कैसे किया। तो वहां से I think I started, and earlier I used to be think it's cool जब मुझे पहले पता चला, but later that turned out to be a passion to know how it happens, How it happens. कैसे हुआ, कैसे किया, यस। इसको रोक कैसे सकते हैं। ठीक सही। है आपने किया तो सही, बट आप इसको रोक कैसे रोक कैसे सकते सकते हैं, हैं। इसका इम्पैक्ट कितना कितना होगा, होगा। इसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए। यस। ये सब चीजें, एक तो आप जब आप सिक्योरिटी फील्ड में काम करते हो, स्पेशली ऑन द डिफेंसिव साइड, you have to learn about the impact also, and you would have to think about the solutions सॉल्यूशन also. आल्सो, यस। ये दोनों चीजें, तो आई थिंक सोल्यूशन वाला पार्ट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, ये इम्पैक्ट है बट इसको रोके कैसे, तो वो एक जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जाती है, हाँ। दैट इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर मी, दैट इज लाइक व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। हाँ ठीक है, इसको रोके कैसे। नाइस नाइस। तो भाई एक और ही बताना चाहूँगा, मतलब पूछना चाहूँगा मैं आपसे, अब ये थोड़े क्वेश्चन से मेरे बाहर है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हो चुका था, उसका एक क्वेश्चन और है। तो कि ना जैसे अब क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर है, तो इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग कितना रोल निभाता है, मतलब कि ना आप वहाँ पे मैक्सिमम जो है ना, क्योंकि जब अपन सिक्योरिटी डोमेन में आते हैं ना, तो बेसिकली वी नीड टू लुक फॉर मोर ऑन द सिक्योरिटी पार्ट एज कम्पेयर टू द एक्सप्लोरेशन पार्ट। सो यहाँ पे जो रोल है अभी, क्योंकि क्या होता है जब अपन लोग VAPT कर रहे थे, वहाँ पे क्या था भाई, टेस्ट करो, हैक करो, हैक करो। और अब सिक्योरिटी डोमेन में आ गया अपन, क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर है, तो अब यहाँ पे उसका कितना रोल है, या फिर है कितना है, ये थोड़ा सा ही जानना चाहूंगा मैं। आई थिंक टू सम एक्सटेंट इसका रोल एग्जैक्ट जो आप टेक्निक्स वहां पे यूज करते हो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में, वो आप एग्जैक्ट टेक्निक्स यहाँ पे नहीं यूज कर पाओगे। सही बात है। थोड़े बहुत टेक्निक है, जो बेसिक्स तो हर जगह सेम है, बिल्कुल। बट हाँ, क्लाउड इज मोर अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, हाउ गुड कॉन्फ़िगरेशन यू हैव डन। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो आप उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। सही बात है। तो वो सब चीज पे ज्यादा है, जैसे लाइक जो भी क्लाउड के ब्रीचेस होते हैं, लाइक लेट्स से तो Capital One का हुआ था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का EC2 इंस्टेंस, लाइक दे हैव
they got access to the EC2 instance पे जो profiles होती है, role Yes. profile, उसके credential. So that was one of the like biggest security loopholes. Yes. जो कि configuration के perspective से जिसने वो service बनाया उसको नहीं पता था, उसको okay, नहीं ऐसा कोई loophole हो सकता है. Yes. So basics exploitation के बाद same है, but it's more about how you can exploit those security configurations. उसमें क्या loophole है जो तुम exploit करके you can find something. ओके ठीक है भाई, तो मतलब काफी लंबा आपसे क्वेश्चन आंसर कर लिया। 1 घंटा तो शायद अमेजन का भी नहीं चला होगा ना? नहीं, उनका 1 घंटा ही चलता है। So 1 hour is the total time for each round of interview. क्या बात है, क्या बात है, हमने 1.25 घंटा क्रॉस करा। Almost exact same. हाँ चलो बहुत बढ़िया यार, आपने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अब लास्ट क्वेश्चन ये कि ना हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई भी आप ऐसी टिप देना चाहे कि यार बॉस, अगर आप, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया से हैं, दे आर बिगनर, एंड हम लोग, मैं और रिद्धि, उनकी ऑलमोस्ट ऑलरेडी से ज़्यादा पूरी क्लासेस लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब पिछले 1.5-2 घंटे की कंटिन्यूसली क्लासेस दे रहे हैं पिछले 2 साल से हम लोग उनको। सो हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि ना वो लोग इंडस्ट्री में आए और ऐसे नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है मार्केट के अंदर जो आए और अपनी स्किल को प्रॉपर प्रूव कर सके। और अभी अपने कोर्सेज वगैरह बहुत हैवी होते हैं, बहुत प्रीमियम कोर्सेज, बहुत कॉस्टलियर होते हैं। सो एक बिगनर के लिए अफोर्ड कर पाना, और साइबर सिक्योरिटी एक बिल्कुल डिफरेंट एजुकेशन है जो अपने बीटेक वगैरह में नहीं आती है, अब तो आना शुरू हो गई है, पर पहले नहीं था बीटेक में, तो आपको अलग से ही कोर्स करना पड़ेगा वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए आपकी भाई, अगर मान लो आपको हमारी तरह या आपकी तरह उनको सिक्योरिटी फील्ड में आना है, तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में आई थिंक टू स्टार्ट, Yes. उनको स्टार्ट करने के लिए दे शुड फर्स्ट डिसाइड, पहले तो उनको डिसाइड करना चाहिए उनको कौन से सिक्योरिटी डोमेन में जाना है। Yes. क्योंकि सिक्योरिटी डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। Yes. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, Yes. नेटवर्क सिक्योरिटी, कोड सिक्योरिटी। सो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, सही बात है। know about all the things a bit, but expert एक चीज में you have to be. So I Yes. think they should first decide कि उनको किस सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है, and when they are sure, ठीक है मुझे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे फोकस करना है, then they should start learning. So learning is the biggest thing. They should start learning. They should get their hands dirty with real world projects. कंपटीशन होते हैं, ओपन सोर्स स्टफ है, ये सब चीजें से लर्न करना चाहिए। देन नेटवर्किंग व्हेन आई से नेटवर्किंग, mingle with people who know security. Yes. उनसे गाइडेंस लो, उनसे सीखो, उनसे बात करो, उन्होंने कैसे किया, ये सब चीजें बनाओ। और ऑनलाइन कम्युनिटीज बहुत सारी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी है, ज्वाइन देम, लर्न देम। इवेंट्स होते हैं सिक्योरिटी, जैसे मुंबई में नल कौन होता है, इवेंट होता है, अभी गोवा में होने वाला है, ज्वाइन दैट। हाँ, तो वो सब चीजें आप करो। स्किल्स बहुत, आई मीन सीखने के बहुत माध्यम है यहाँ पे, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। सेलेक्ट योर स्ट्रीम, कौन सी डोमेन में जाना है स्पेसिफिक, एंड देन स्टार्ट लर्निंग, स्लोली लर्निंग, आस्ता आस्ता। और इस फील्ड में ऐसा होता है कि कभी कभार यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, कुछ करने का आप ट्राई कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। सही है। So, पेशेंस जरूरी है। हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी है, खासकर पेशेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं और एक्सप्लॉइट कोई बात नहीं, इट वुड टेक टाइम, कीप पेशेंस, एंड आई थिंक एट द एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट सिक्योरिटी, इट वुड बी रिवार्डिंग एट द एंड। लाइक लोगों ने अपने करियर बनाए हैं, पीपल हैव बिकम बिलियनियर फ्रॉम सिक्योरिटी डोमेन एंड बाउंटी एंड एवरीथिंग, दे आर अर्निंग गुड सैलरीज आल्सो। सो आई थिंक select your domain, start working, keep learning, open stuff, do competition, attend the events which are there, and do network with people, learn from them, like you are there to teach them. So joining with you or other people who are like you there, so it would be helpful for them. Yes. एक क्वेश्चन आया हमारे पास यहाँ पे सब्सक्राइबर से कि ना सर ये बताइए एक बार, ये क्लाउड सर्टिफिकेशन जो बहुत लो बजट का है, मतलब जो कोई भी कर ले, या कोई कहीं पे ऐसा रिसोर्स का हम लो बजट तो बड़ा क्वेश्चन है। लो बजट पता है कि कंपनीज भी चालाक होती है, सो दे हैव केप्ट द सेम प्राइस फॉर ऑल द सर्टिफिकेशन। तुम ये वाला करोगे सिंपल, उसका भी इतना ही है, और कॉम्प्लेक्स वाला करोगे इसका भी इतना ही है। ओके, आई थिंक
प्राइसिंग के हिसाब से सब सेम है एज ऑफ नाउ, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, सबसे आसान वुड बी क्लाउड प्रैक्टिशनर. क्लाउड सो प्रैक्टिशनर, AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स है. हाँ. इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, बट इट्स क्वाइट सिंपल एंड इट वुड गेट यू इनसाइड दैट क्लाउड का Okay. डोमेन एंड यू लर्न समथिंग अबाउट दैट. आई थिंक वहां से यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. ओके 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 ओके, ग्रेट 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 भाई. और ठीक है भाई, काफ़ी कुछ आपसे ना जान लिया आज, है ना. मतलब आपका एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू ले लिया, ठीक है ना. और काफ़ी दिनों के बाद हिंदी बोले कैसा लग रहा है ये बताओ आप तो. अरे तरस जाते हैं कान कभी कभार. आज भाई ने, फीलिंग्स नहीं निकलती है. हाँ? यू नो वो बात है कि इंग्लिश में फीलिंग्स नहीं निकलती है, तो Yes, कभी वो yes, feelings अच्छे से निकल हाँ. जाती मतलब है. मैंने भी ये सुना है कि ना, मतलब बहुत सारे लोग, अभी हमारा जो चैनल है ना, बेसिकली हम लोग इंडिया के फर्स्ट चैनल है हमारा, जहाँ पे हम लोग हिंदी के अंदर बच्चों को है ना ट्रेन कर रहे हैं. और डेली के मतलब 2-2 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स होती है हमारे यहाँ पे, और हिंदी के अंदर ही. तो मतलब हम लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स बच्चों के पढ़ते हैं कि सर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, इंग्लिश में सब पढ़ा रहे हैं, पर वो फील ही नहीं आ पा रहा. मतलब आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हिंदी में पढ़ के. ट्रू ट्रू. नहीं ये तो बात आई टोटली 100% एग्री विद दैट. जो हिंदी में तुम्हें पढ़ के समझ में आता है, यू नो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये समझ में आया ना भाई. वो चीज कभी कभार इंग्लिश में नहीं आती, नहीं आ पाती. स्पेशली फॉर द इंडियन ऑडियंस. Yes. बट ठीक है. अब आ जाएगा धीरे धीरे. चलो बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके. और थैंक यू सो मच, आपने ना इतना टाइम निकाला हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए. और है ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ना भाई, ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है उन लोगों के लिए जो बिगनर है, और आप लोगों की गाइडेंस आगे रहेगी. और मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि ना ऐसे लोगों को लेकर आए जो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा है, काफ़ी लाइफ में सीखे हैं और सीख के खुद करा है. तो इसलिए मैंने बोला कि यार आपको तो ज्वाइन कराना चाहिए. नहीं आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, सिक्योरिटी डोमेन में लोग सिखाते बड़ी मुश्किल से. सही बात है. यू आर डूइंग दैट सो दैट इज अ गुड थिंग. आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट. सो या एंड लोग सोचते हैं कंप्यूटर बन जाएगा हमारा सीख के. लोगों का ये होता है. ये चीज है सिक्योरिटी डोमेन में, पता नहीं क्यों है ये, बट समहाउ ये है. मतलब लोगों को लगता है कि ना अगर इससे सीख लेना तो ये मेरा कंप्यूटर बन जाएगा. लोग ये नहीं सोचते कि अगर ये सीखेगा ना तो 4 लोग और सिखाएगा, उससे क्या है कि एटलीस्ट लोग अवेयर होंगे. आज की तारीख में कंपनी सिक्योरिटी को सेकंड प्रायोरिटी ले लेती है. तो जब सब जान जाएंगे तो उनको पास चैलेंज नहीं होगा और वो आराम से कर पाएंगे चीज़ों को. तो ये लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को लगता है कि नहीं भाई चैलेंजर हमारे खड़े हो रहे हैं. ये भी जाके बग बाउंटी लेगा. हाँ ये भी आके ले आएगा और मेरा नंबर कट जाएगा उसमें से. सही. ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और ना आपने बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताई जो शायद हमारे सब्सक्राइबर को नहीं पता होगा, और शायद हम भी नहीं बता पाते होंगे, क्योंकि आप जिस कंपनी के अंदर है या फिर जिस एनवायरनमेंट में, वहाँ से आपने वहाँ का वर्किंग कल्चर आपने बताया, टूल्स बताया. और नया एक क्लाउड सिक्योरिटी एक बहुत उभरता हुआ मतलब मार्केट है. जैसे अभी IoT एक नया मार्केट आ रहा है, तो ऐसे ही ये उभरता हुआ मार्केट है. तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड नेक्स्ट टाइम जल्दी फिर मिलेंगे. ओके, It was pleasure and thank you so much. थैंक यू सो मच. बाय. Cheers. Bye. Bye.